So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we're gonna talk about the remaining protein synthesis inhibitors या बोल सकते हैं miscellaneous protein synthesis inhibitors. So the other than aminoglycosides and tetracycline which we have discussed as protein synthesis inhibitors, today we are gonna look at some class like chloramphenicol, macrolides, Lincosamites and oxazolidones. Okay. So there are many different classes of medications that prevent the ribosomes from synthesizing the proteins. So these are the classes of medications that prevent the bacterial ribosomes from synthesizing the protein. तो मतलब जो राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस. सो नाउ देर आर टू स्टेप्स ओके फ्रॉम जीन्स से प्रोटीन बनाने के टू स्टेप्स होते हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. सो हियर द ट्रांसक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन इज गिवन, दैट इज न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है. अब डीएनए के अंदर जीन है, तो जीन को रीड एंड कॉपी करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से वो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्ट करेगा डीएनए से आरएनए, तो वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा. एंड मैसेंजर आरएनए इज अ ब्लूप्रिंट फॉर व्हाट प्रोटीन टू बी बिल्ड. ओके, तो जो प्रोटीन बिल्ड होने वाला है उसका जो ब्लूप्रिंट है, दैट इज द मैसेंजर आरएनए. ओके, या एमआरएनए. सो दैट्स अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन. अब ट्रांसलेशन क्या होता है? सो ट्रांसलेशन इज ए द प्रोटीन सिंथेसिस. सो अमीनो एसिड्स के जो सीक्वेंस है उससे मिला के हमको एक प्रोटीन चेन बनानी है. ओके, एंड दैट प्रोटीन चेन फॉर्मेशन या प्रोटीन सिंथेसिस नोन एज द ट्रांसलेशन. ओके, सो mainly the classes here we're going to study that inhibits the translation or protein synthesis. Okay, so now mainly wo there are two kinds of cell, that is prokaryotic and eukaryotic. Okay, so mainly this medications act on the prokaryotic cells. Okay, so they have the 50s subunit and 30s subunit that form the 70s ribosome, and they do not affect the eukaryotic cells. So hence these are beneficial to the humans, making intact the eukaryotic cells and only affecting the prokaryotic cells. Okay, so now moving on, that is protein synthesis के प्रोसेस कैसे होती है. गाइज मैंने आपको ये पहले भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन वीडियोस में पूरा समझा है, बट दिस जस्ट फॉर क्विक रिवीजन. ओके, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो गाइज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना. ओके, सो नाउ देर आर थ्री मेनली प्रोसेस इन द प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. ओके, सो गाइज मैं इधर जल्दी जल्दी बताऊंगा, हर एक स्टेप नहीं बताऊंगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्क्रिप्टेड ऑल दिस फैक्ट्स इन वीडियोस ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स एंड द अमीनोग्लाइकोसाइड. सो अगर आपको देखना है वो डिटेल में, सो आई हैव एक्सप्लेन इट इन देयर. ओके, सो नाउ देयर इज द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. ओके, सो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पे एक तो टारगेट हो सकता है, एंड 50s सब यूनिट पे मेनली टारगेट कर सकते हैं सेल्स. ओके, एंड मैंने आपको बोला था कि अ ट्रिपल सेट, ए यूनिवर्सल, अनएम्बिगुअस, अ स्पेसिफिक कोडॉन, ठीक है, जो 3 अमीनो एसिड्स का होता है, एंड दे विल पर्टिकुलरली बाइंड टू एन एंटीकोडॉन. ओके, एंड एंटीकोडॉन वो कैसे आएंगे, दैट इज ऑन द ट्रांसपोर्ट आरएनए. ओके, एंड देयर आर द 3 साइट्स ऑन दिस राइबोसोम, दैट इज अमीनो एसिड साइट, पेप्टिडाइल साइट एंड एक्सिट साइट. ओके, सो नाउ ड्यूरिंग द एलोंगेशन प्रोसेस द फॉर्मल मिथियोनिन या फिर मिथियोनिन जीन होता है, वो स्टार्ट कोडॉन की तरह एक्ट करता है, एंड इट्स स्टार्ट्स द कोडॉन एंड कन्फर्मेशनल चेंज अकर. ओके, कन्फर्मेशनल चेंज होगा जिसकी वजह से ए साइट एक्टिव हो जाएगी, एंड द नेक्स्ट प्रोटीन कैन कम एंड बाइंड टू द ए साइट. ओके, मतलब इधर पे पी साइट पे जब कन्फर्मेशनल चेंज होगा तब ए साइट एक्टिव होगी, एंड ए साइट विल बी रेडी टू गेन द मोर ट्रांसपोर्ट आरएनए. ओके, so now in the elongation process here we can see tRNA has come, and the formal methionine, it has also brought a amino acid. Okay, so now the bond is formed between the first formal methionine and the second tRNA. Okay, and this bond formation is known as the peptidyl transferase enzyme helps in the process, and the process is known as the transpeptidation. Okay, so now ट्रांसपेप्टाइडेशन की वजह से अब क्या होगा कि धीरे 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 जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे ये स्लाइड होते जाएंगे. ठीक है, एंड दिस विल फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेंज, एंड
hence the process will repeat several times. Okay, and here आप देख ही सकते हैं कि अब A साइड से वो P साइड ट्रांसलोकेट हो गया. Okay, so the tRNAs are keep on translocating their position, so this process is known as the translocation. Okay, so this process is known as the translation, and the new tRNA comes through and it binds and hence form the peptide bond, and transpeptidation takes place, and this shifts the this side. Okay, and then the tRNA comes here. Okay, so basically अब ये प्रोटीन की चेन इधर से ऐसी अपनी पी साइड पे बनती ही चली जाएगी. Okay, and in the termination process the stop codon comes and hence the process is stopped. Okay, so now moving on towards the class, the medications, that is the chloramphenicol. Okay, and they act on the peptidyl transferase. जो peptidyl transferase बन रहा था उसको inhibit कर देंगे, hence no bond formation, hence no protein formed. So they can be taken parenterally or perorally. Okay, and they are the broad spectrum of bacteriostatic medications that limits the growth of bacteria. They crosses the blood-brain barrier. Okay, and यूज्ड इन द कॉज ऑफ मतलब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को प्रिवेंट करने में मदद हो सकता है. एंड दे हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम. ओके, एंड उसमें जो एसिटाइल ग्रुप होता है दे इनएक्टिवेट्स द क्लोराम्फेनिकॉल. सम स्ट्रेन्स ऑफ हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निजेरिया, मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियोइड स्पीशीज एंड रिकेट्सिया स्पीशीज आर ट्रीटेड बाय क्लोराम्फेनिकॉल. ओके, सो बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ द क्लोराम्फेनिकॉल, ओके, and they cross the blood-brain barrier, they no longer are safer alternatives. Okay, but today also they are used as the ophthalmic solution in the bacterial conjunctivitis. Okay, so basically वो bacterial meningitis cause करते हैं and they are resistant to several enzymes, so they are not used and they are bacteriostatic. Okay, and they inhibit the peptidyl transferase. So side effects में क्या क्या हो सकते हैं, that is they would kill off the hemopoietic cells causing aplastic anemia and decrease in platelets and leukocytes. Okay, and hemopoietic cells को वो kill कर देगा तो it will cause the bone marrow suppression, and they are also the teratogenic, so should not be given in pregnant people or newborns. So न्यूबॉर्न्स में क्या तकलीफ कर सकते हैं, दैट इज इन्फेक्ट्स लैक द ग्लूकोनाराइड ट्रांसफरेस और द मेडिकेशन एक्यूमुलेट्स एंड कॉज द ग्रे बेबी सिंड्रोम that makes the baby anemic and cyanotic, and that may lead to the cardiovascular collapse. मतलब it is harmful to the fetus. Chloramphenicol also, they inhibit the hepatic enzymes in the cytochrome P450 family. Okay, so they inhibit the cytochrome P450 and they break down the other drugs, example warfarin, and when inhibited, the actions of the medications like warfarin increase. Okay, and they lead to the harmful effects. सिंपल है. द नेक्स्ट क्लास इज द मैक्रोलाइड्स. ओके, द फर्स्ट क्लास हमने देखा दैट इज क्लोराम्फेनिकॉल. इट वाज द मेडिकेशन, ओनली मेडिकेशन इन इट्स ओन ग्रुप. मैक्रोलाइड्स में 3 एग्जांपल है, दैट इज एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन. सो दे ट्रीट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंड दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द बर्टनेला पर्टोसिस या वूपिंग कफ. ओके, whooping cough में that is the drug of choice या first line of treatment. It is also used in typical pneumonia and atypical pneumonia. Okay, and atypical pneumonia is caused by Mycoplasma pneumoniae or Legionella species. Okay, and azithromycin also used in STI, sexual transmitted infection, for example chlamydia and syphilis, and clarithromycin is used with amoxicillin and omeprazole, that is the tetracycline, modified tetracycline, and the proton pump inhibitor या PPIs to treat the Helicobacter pylori infections causing peptic ulcers. So macrolides में क्या क्या है, that is gram positive and gram negative, and it is the drug of choice for the whooping cough caused by Bartonella pertussis, and typical and atypical pneumonia में भी it's useful, and also useful in STI and peptic ulcers. Okay, so now मैक्रोलाइड that are resistance because of this efflux protein. अब बैक्टीरियल सेलों में जो efflux proteins होंगे वो क्या करेंगे, जो मैक्रोलाइड्स अगर हम इंजेस्ट करेंगे तो they will throw out the macrolides and hence the action is not shown. Okay, so this is the resistance offered by the bacteria to the macrolides. Side effects में क्या क्या है, that is diarrhea, nausea and vomiting, and prolonged QT
interval, so it is contraindicated in people with arrhythmias, and it is also causing the hepatotoxicity, which is contraindicated in people with liver disease. Okay, and erythromycin and clarithromycin are cytochrome P450 inhibitors, so they inhibit the cytochrome P450. Okay, so now the third class is the Lincosamites. So Lincosamites में जो example है, that is the Clindamycin, that is most commonly used. Okay, and it is effective against the anaerobic bacterial infections of the lungs and mouth, या बोल सकते हैं डायफ्राम के ऊपर, अबव डायफ्राम के ऊपर जितने भी ऑर्गन्स है उसके रिलेटेड अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, देन क्लिंडामाइसिन इज यूज्ड. ओके, so mainly it is taken perorally or parenterally and also given topically. Okay, and the topically cream is used to treat the acne. Okay, to treat the acne, so it tastes bitter, so it is not prescribed to children. The clindamycin is not prescribed to the children. Side effects में कौन कौन सा है, that is diarrhea, nausea, vomiting and cramps. And if used long term, that it can cause the bacterial super infection of Clostridium difficile that will cause the pseudomembranous colitis. Okay, so Lincosamides कैसे काम करेंगे मैंने आपको बताया, सॉरी क्लिंडामाइसिन मैक्रोलाइड्स में मैक्रोलाइड्स कैसे काम करेंगे. सो दे बाइंड टू द 50S, द बिग सब यूनिट of the ribosome, and hence the transfer of the tRNA does not take place, and hence inhibiting the protein synthesis. Okay, so macrolides work in that way, and they are taken parenterally and perorally. Okay, so macrolides का ये mechanism है. So chloramphenicol was inhibiting the bond formation, peptide bomb form नहीं कर पा रहे थे वो लोग. Okay, and here the macrolides are inhibiting the 50S, a bigger subunit of the ribosome. Okay, and the same mechanism is used in the Lincosamides, that is clindamycin में भी वो 50S subunit के साथ bind कर देगा and no further protein synthesis takes place. Okay, so now the last class, that is oxazolidons. Okay, या oxazolidinons. Okay, and there is the new group of drugs, and they most common example is the linazolid. Okay, so हमने पढ़ा अभी तक क्लेरिथ्रोमाइसिन, सॉरी मैक्रोलाइड्स, फिर क्लोराम्फेनिकोल, फिर लिनाजोलिड एंड द क्लिंडामाइसिन. ओके, तो 4 क्लास हमने पढ़े. सो लिनाजोलिड इज द न्यू ग्रुप ऑफ ड्रग्स. तो वो क्या करेगा एक तो वो सबसे पहले है ना, जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हमने देखा था, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो बन रहा था बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द mRNA एंड द 50 and 30 सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, ये इसको ही फॉर्म नहीं होने देगा. तो जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ही नहीं बन पाएगा तो ऑब्वियसली बात है प्रोटीन सिंथेसिस रुक ही जाएगा. दे हैव द यूनिक स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म. फ्यू ऑर्गेनिजम्स हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस एंड म्यूटेशंस इन द राइबोसोमल RNA एंड प्रिवेंट मेडिकेशन फ्रॉम द बाइंडिंग. सो कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है बाय द म्यूटेशंस इन द राइबोसोमल RNA. अब राइबोसोमल RNA में म्यूटेशंस हो जाएंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस पूरा शिफ्ट हो जाएगा. ओके, सो इट इज अफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड रिजर्व्ड फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. ओके, एंड दैट इज रेजिस्टेंट टू द अदर एंटीबायोटिक्स. मतलब अगर कोई और एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे तब जाके हम दिस ग्रुप ऑफ ड्रग्स वी विल प्रोवाइड. ओके, सो it is effective against MRSA, that is methicillin resistant Staphylococcus aureus, and vancomycin resistant Enterococcus faecium, यह बोल सकते हैं VRE. साइड इफेक्ट्स में शॉर्ट पीरियड में इट विल कॉज डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड रैश, एंड लॉन्ग पीरियड में इट में कॉज बोन मैरो सप्रेशन लीडिंग टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड ऑप्टिक न्यूरोपैथी. ओके, इट इनहिबिट्स द मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंड breaks down the serotonin. Okay, so अगर antidepressants है that increase the serotonin, so it will lead to the serotonin syndrome. मतलब वो breakdown of the serotonin will बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, causing flushing, increase in body temperature, muscle rigidity, tremor and seizures. So serotonin syndrome, फिर thrombocytopenia, bone marrow suppression, or peripheral neuropathy and optic neuropathy are some of the side effects that is caused in long period of the using of linazolid.
लेनिजोलिड, एंड शॉर्ट पीरियड में गैस्ट्रिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, दैट इज डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड रैश, एंड दे आर ऑल्सो टेकन परओरली एंड पेरेंटरली. ओके, सो ऑक्सीजोलिडॉन्स एक हमने क्लास देखा, फिर लिंकोसामाइड्स हमने क्लास देखा, फिर मैक्रोलाइड हमने क्लास देखा, एंड द क्लोरामफेनिकॉल. ओके, सो दिस फोर आर द protein synthesis, miscellaneous protein synthesis inhibitors. So now just preparing a fun mnemonic to remember all this. So here is the room, एक पूरा रूम है जहाँ पे 50th बर्थडे बना रहा है एक आंटी अपना. ओके, सो 50th इज टू रिमेंबर द 50s राइबोसोम. ओके, एंड हियर द लेडी इज स्टैंडिंग वाया होल्डिंग द केक. सो it represent holding the candle and it is attached to the cake, so it represents the formation of the peptide bonds, that is peptidyl transferase. Okay, so now there is a cake and a chlamydia that represents the chloramphenicol is attached to the cake, and here it has the red eyes seeing the bacterial conjunctivitis. Okay, so in side effects it is showing the bone attached to the cake, that is seeing the bone marrow suppression. There is the red blood cells on the table that represents aplastic anemia. The cell which is dead, that represents that it is a cytochrome P450 inhibitor, and it is the lady is pregnant and holding a gray baby, so the gray baby is showing the gray baby syndrome, and the pregnant, that is showing the contraindicated in infants and during the pregnancy. Okay, so here, so moving on toward the next class, that is they inhibit the translocation. There are the two class, that is Clindamycin and the Macrolides. Okay, so moving on to the Macrolides, there is a army of mice that is holding the lids, that is the Macrolides. So the red one is the erythromycin, the second one was wearing the azit hat, that represents the azithromycin, and the third one has a clear or transparent vision, that is the clarithromycin. Okay, so here it is representing the crane is coughing too much, that is whooping cough, and the second one is in the bed causing cough, that is typical pneumonia, and a grandpa walking, that is the walking pneumonia बोल सकते हैं, atypical pneumonia. The here for side effects, there is a cute squirrel vomiting. That vomiting represents the GI distress, and the cute squirrel represents the QT syndrome. Okay, so the next class is the clindamycin. Okay, so clindamycin में क्या क्या है, that it is in the fish tank, that represents the anaerobic environment, and she has the acne. The Cinderella mice has the acne, representing that it is used to indication for the acne. And for the side effects, it can cause GI distress, and in long term the vomit is going through a closet, that represents the infection of the Clostridium difficile causing the pseudomembranous colitis. Okay, and clindamycin is also effective. The fish tank is supported by the diaphragm, so it represents the anaerobic infections above the diaphragm. Okay, so the last class is the linazolid. Okay, so the married couple is representing the subunits. Okay, that is the 50s and 30s, and the linazolid is separating the both because initiation complex form ही नहीं होगा. Okay, so the couple is also joining the party, and his son is enjoying the controlling the Mars rover, that is the MRSA, and he is doing via the VR goggles, that is the VRE, representing the VRE, and the Mars rover represents the MRSA, that is methicillin resistant staphylococcus aureus. Okay, and the for the side effects, there is a soldier lying down the floor. Okay, that is representing the muscle rigidity, flushing, hyperthermia, that are the effects of the serotonin syndrome की वजह से flushing, hyperthermia, muscle rigidity and bone marrow suppression होगा. Okay, and the bandages represent the peripheral neuropathy, and he is the holding the bone, showing us the bone marrow suppression. Okay, and here I forgot to tell you, the azithromycin is also used in chlamydia and other STI, and the clamp is standing on, showing the chlamydia and other species, and the clarithromycin
has the mice has the H. pylori, Helicobacter pylori bacteria in its stomach, so it is also used in the peptic ulcers. So I hope you understood the whole, you know, map या whole animation. I know थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, but I hope you are understanding this all things. Okay, so here's the mind. Once a recap, that is antibiotic that inhibits the protein synthesis. So oxazolinoids, that is the example linazolid, that stops the initiation complex from forming. The macrolides and lincosamides, that is clarithromycin and macrolides such as they prevent the translocation, and chloramphenicol that inhibit the peptidyl transferase and that creates the peptide bonds. तो peptide bonds का formation नहीं होगा, या फिर translocation नहीं होगा, या फिर initiation complex formation नहीं होगा, तो it will ultimately lead to the inhibition of the protein synthesis. Okay, so I hope आपको ये पूरा वीडियो का समझ में होगा. So here is the mind map that you can just go on study. That is 50s ribosome, a pregnant the lady representing the peptide bond formation, the cytochrome P450 inhibitors used in bacterial eye infection, contraindication pregnancy, side effects such as bone marrow suppression, Gray baby syndrome, aplastic anemia, the drugs. The next class of the macrolides, erythromycin, azithromycin, clarithromycin, and the indications such as whooping cough, atypical pneumonia या walking pneumonia या typical pneumonia, side effects में QT syndrome and vomiting. The shell represents the chlamydia and STI and the Helicobacter pylori infection. Okay, and the next class is the linazolid. तो linazolid के indication कौन कौन, that is VRE and MRSA and serotonin syndrome, hyperthermia, फ्लशिंग, फिर मसल रिजिडिटी, बोन मैरो सप्रेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी. ओके, ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्लास इज द क्लिंडामाइसिन, रिप्रेजेंटिंग इट इज़ इन एनारोब्स यूज्ड अबाउट द डायफ्राम के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें यूज़ होता है. ओके, एंड ओके एंड एनारोबिक बैक्टीरिया एंड GI डिस्ट्रेस एंड द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कॉजिंग द क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन. सो आई होप आपको ये पूरा माइंड मैप समझ में होगा गाइस. ये माइंड मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू द ड्रग्स यूज्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स. ओके, सो हियर आर द आंसर्स. ओके, मैंने आपको बता दिया है. सो आई होप आपको ये पूरा गाइस वीडियो समझ में होगा. अगर कुछ भी ना आया समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन सेक्शन बिलो एंड आस्क फ्रीली. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट गिव्स माई लॉट ऑफ मोटिवेशन every time you do so. And until then, stay safe, stay happy, and I'll see you soon. Thank you.